Good evening, everyone, and happy Dhanteras. So, festive season has started, and um, we are today celebrating Dhanteras. And with this, not just for the praise of wealth and prosperity in each and every house, in the life of each and every person, but also Dhanvantri, the god of health and wellness. That message also is associated with this particular day. And when we talk about health and wellness, so we need to each and every one of us, we need to understand the importance of our surrounding, our environment, how important it is to understand, to protect the environment and the climate and the natural resources that God has gifted us for our health and well-being. So today we have with us Colonel Shashikant G Dalvi. He's a retired army person, and nowadays he's a national coordinator, water conservation, climate reality project India. And Colonel Sir is today going to speak on global warming impacts on water resources. So this is something very, very important, and we all should understand the importance of nature, the importance of natural resources. So let's just go to Sir and understand more deep onto this particular topic. So my dear ladies and gentlemen, those who are listening us live on the YouTube channel, please put your hands together to welcome Colonel Shashikant Dalvi ji. Sir, a very good evening and thank you for giving us your time. Good evening, Chitraji. Thank you for inviting me to share my experience with the audience. Good evening, friends. Today, like what Chitraji has said, the topic is very apt. It's global warming and its adverse rather effect on the natural resources, especially the water. So let us start. Yes, Chitraji, sir. you can So start the. yes, sir, with your permission, I should share the slide. Yes, Yeah, sir. please. Ji. So I hope that my screen is visible now. Yeah, it is visible to me at least. Ji, sir, it is. Okay, then. Yes, it is. Yes, sir, we can go ahead. Yeah. Next. Right, sir. Next. Next few slides you will find the what was the temperature during year 2011 when the slides were made, and there is not much of a change, rather change on a higher side. The temperatures are increasing world over. Now let us see what the these are the natural things, how we get it. Now here we find, you can hold on for a minute, Chitraji. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. here you will find how close is the planet Earth from the sun, our main driver force or the center of this our solar. Uh, Now here you'll find we are at the number three. We haven't missed the first. Mars has been missed here. That will be there. Now you will notice here the temperatures, which has. Don't go by Mercury. Mercury is though it is closest to it is 167 degrees centigrade. Its temperature is. Venus is, you can note it down, but Earth is 15 degrees centigrade. These are the ambient temperatures of the various planets. This is our temperature. Kindly note this temperature. As we go ahead, we will more speak on that. Please go ahead. Ji, Next. ji. Now, okay, let us go back to about more than 250 years when, that is 1880, when the date has been taken. That's a time when the industrial revolution started in the world. Probably we human beings started towards the industrialization.
for our growth. And yes, today I am speaking to you from Pune, and all of you are hearing to me, will be interacting with me from various places all over India, wherever you are. Now, this is a definitely a growth because of the industrial revolution where we are going. But what we feel, and any industrial growth or any industrial activity definitely requires energy. And main source of energy, if you think of 1800, was the fossil fuel. Now, what happened with this fossil fuel is you burn, 1 kg of 1 liter of petrol oblique diesel or any fossil fuel for that matter, it generates average 2.5 kgs of carbon dioxide. And how many petrol diesel what we use is mind blowing figures. But I'm taking only one particular uh, thing about in this particular thing is only fuel, fossil fuel. And now with this, the temperature rising, you have seen how much it has jumped up. Next, it will be more clear. Chitraji, next. Should we move on, sir? Yeah, please. Now here, you'll find, no, please go back. Please go back. I'll tell you next. Now here you will see, this is what is, we are in the today's world, not what it was in 1800 or 1900. We are now Ji. in today's century. You'll find everywhere the fuel plays a very major role. You take anything here and you'll find some form of fossil fuel is being used, whether it's the burning of a coal or aviation fuel, you name it. And like so this is the thing which now affecting us badly, and it is affecting the rise in temperature. Next slide. Yeah, next. Now here you will find how our temperatures have increased over a period of time, and how with the use of fossil fuel. Next. Now you'll find as the CO2 increases, there is a rise in temperature. So here, this particular graph shows you that. If you see the how we have moved, and now we are reached 2000, more than 2000. We are now in 2023. So you will find there was till some time we were going slowly and then started jumping. Probably, if you see after the 1900 and especially the World War One and World War Two, after that, there's a huge jump in the industrial activities on all the firms, not only manufacturing, everything, IT field, everywhere, resulting in very big jump in CO2 generation, resulting in the rise in temperatures. Next. Now, what happens? This is the energy which is man-made because of our own activities. Now, the entire thing is equivalent to exploding. That figure is now old. It is now equal to 5 lakh, that is 500,000 Hiroshima type of atomic bombs per day for 365 days per year. Imagine, it's some mind blowing. One small Hiroshima type of bomb was exploded on Hiroshima and Nagasaki, and people are still facing the adverse effects in those places. And we are facing now. It is build up right from industrial revolution start about 250 years, and now it is cascading effect. We'll go slowly in that. Next. Ji. Next, Shilpa.
Is this correct, sir? So can you hear me? Now I can see the change. Ji, 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 Okay. ji, ji. Now let us go ahead Yes, sir. so that we'll be able to hit at the proper places and wait and discuss. Now we all know. No, no, keep on that. Keep on that last slide. Mhm. Chitraji, keep it on the last slide. Yes, sir. Now we know that this particular planet, when our space travel started, and first time these through the long distance in space, we took the photograph of our planet, Mother Earth. We found a blue dot. Like Venus sees a white, M- Mars sees as a maroon. So similarly, our planet Earth looks blue dot, a blue color, indicating that plenty of H2O, that is water on this planet. And we know it, 97% of the water available is on 75% of, of our planet's surface. So naturally, the ocean, which contains 97% of the available water on this planet, is is plays very important role in the climatic conditions of this our planet. For years, for donkeys years, as a matter of fact, it maintained the particular temperatures. With this particular thing taking place, we have seen it is amounting to about 500,000 Hiroshima bombs every day for 365 days a year. Now, 90% of the extra heat trapped by the man-made global warming pollution goes into ocean. So you will Mhm. say, how does it makes a difference? Ji. The heat. So the ocean temperatures have now increased 32 degrees centigrade. It's not a small Okay. amount. That is how the entire, if we talk about the India as such, or in this particular Indian subcontinent, etc., is concerned, you'll find that our monsoon cycle is totally disturbed. Mhm. It's totally disturbed. At the same time, because what happens is, we know for years, at least in Maharashtra, I can say, by between 7th and 10th of June, monsoon used to start release. Then it used to continue for 4.5 months till end of the Diwali, and then the 85% of the monsoon rains in this part of India is to stop. And then Ji. a balance is pre-monsoon, post-monsoon, winter rains, etc. Smoothly it was going. But last 10, 15 years, you'll find everything is disturbed. It never starts in June. In the Pune, where I am staying, or Maharashtra, as a matter of fact, till middle of July, there are no rains. Wherever you are staying, you will find the same change taking place. So you will find even in Pune, despite this, average rainfall has almost remained same. That is 750 degrees, 750 millimeters per year. Mhm. And but now what has happened? Earlier, in a particular time it used to take place. Now in a shorter time it is taking place. Now that is affecting what? Pouring of heavy rainfalls. Like today, Pune is facing for last 2.5 hours heavy rainfall. So it helps nobody. Only it will help you by the water table may increase. Not water table as such, but the water storage capacity in reservoirs, especially dam reservoirs, may increase if the same thing is happening in the catchment area of the dams. Ji. Otherwise, it is of no use to any other thing other than cooling down the atmospheric temperature. Next slide. Yes, sir. So this is what we are saying is how it is increasing. Next. Ji. No effect, like what I was telling you. Earlier in India, we used to get about two typhoons, or the
hurricanes visiting India, 2 to 3 a year. जी. Now it is already 8 to 10, Mhm. and you know how bad it is. Just showing you an example of whatever, wherever it is happening. It is Yes. bad. Next. Now you continue slowly. Next slide, Chitra. Yes, Yeah, sir. you This will is see how damage it costs. yes, sir. And you have seen whether it's Uttarakhand or it is Andhra Pradesh, Maharashtra, you name anything. जी. And you will find Kerala few years back, 2 to 3 years back. It is, you don't know what happens, what is eating. All your, mehnat of the lifelong, your complete kheti badi, your houses, your every infrastructure is goes for a six. जी. Huge is the power of the natural forces. Next. Yeah, these are the just figures just to tell you how badly it affects. So next. So we keep seeing this figure every year, especially in the monsoon or some other time also. The only possible explanation for the rise in is weather related catastrophic is climate change. This is what we are leading towards is the industrial revolution has definitely progressed us. But then we forgot that the energy supplier or whatever was the start point for the energy itself is giving us this very huge negative, which slowly and steadily and rapidly, not slowly, rapidly, it is affecting not only a human being survival, but all being survival on this planet. Next. Next slide, Chitraji. Yeah, this is just correlation between the climate crisis and how it happens. The increase, what has happened is, like I mentioned to you earlier, the complete natural timetable is totally disturbed. Mhm. And the frequency has increased. The not only frequency, as severity is also increased. That means what has happened today is suppose today I was supposed to get hypothetically जी. 10 जी. millimeters of rainfall or 5 millimeters of rainfall, but Pune today will be getting about more than 25 to 30 millimeters of rainfall. So this Yes. is, and then what is happening is frequency. You will find which was spread out for 4.5 months. Now it's going to happen in 2.5 months. It's definitely, it is jam packed. So that leads to extreme weather events, heavy Mhm. downfall, and not only it related to rain. What happens is extreme weather fall means flooding. And simultaneously, once the monsoon is over, you'll find temperatures are rising. That will keep on doing it because we are using the energy. So that will keep doing it. So, but when it happens, you'll find the drought conditions are also there. That means one side in the same place, you'll find there is a flood during the rains. And then once the rains are over, and you'll find the drought conditions. That is how it is affecting the global warming is affecting the climate change. Next. Yes, sir. Hydraulic cycle is taught to us in the schools. I don't have to repeat. जी. Come the rains, and then I know this happens. So why waste time on this? Just to show you this. This is what it is. Next. Yes. Now everywhere, like what we have mentioned here, is the larger downpour causes the bigger and more frequent floods. Very true. Next. Very scary pictures. What happened in Pakistan or neighboring nation? Very, very scary. Go ahead. Next. Next sector. Yeah. Yeah. Next.
Rishikesh, Uttarakhand. This become a very famous. This is what is happening, and of course, development. Uh, you can hold on for a 1 minute here. Yes, Uh, sir. in the hilly region, especially the Himachals are known as, or Himalayan mountains are known as a young mountains. If you compare to the Western Ghats in southern India, due to development, so many tourists are going there, and you see so many buildings were constructed, and it is there for the landslides and the damage it's causing. We don't match those things. Next. Yeah, yeah. Next. Yes. As the global temperature increases, naturally the vapor contents into the clouds become more and more. The Earth's water cycle intensifies even more because now the cloud contains more vapors compared to what it was earlier. Because the rise in temperature of the ocean temperatures gives rise to more vaporization. Where are they going to go? They are going to go into. So this is how it is badly affecting the cycles. Next. You can go through one by one. There's nothing big to explain about them, but Ji. only for the just to know that this is what happens, which is affecting our, the droughts are longer these days. The Mm-hmm. flooding is also taking place simultaneously. So things are not very good. And Mm-hmm. you know what, in the Asian countries or a poor nation or developing nation, we're not able to match the climatic events or extreme climatic events or rise in global warming to our everything. Whether, because I will not go to the agriculture today's topic way, but you will find that the per drop, the increase in crop is lowest in India. Whereas people are keeping the some of the, even Vietnam and some other countries are keeping the pace with the climate change, and they are changing their farm techniques to suit the uh, climate change and our farm produce, so that we will keep a match and the farm production will remain almost same. Here it is going down badly. So this is how now, why I'm telling to, because there will be more younger lot and the people who are, for him, this is a very major decision to take. Next. Ji. Next. That's what we were discussing about it. Actually, I used to, whenever there's more big time, big time is there, more than an hour where I'm speaking only on this. Then I used to cover all these things, where the food supply, how the climate change or the global warming system affects food supply, water, global health, and infrastructure, which I was just mentioning. Today Ji. we will be focusing mainly on the water. So Ji. next slide. I'll just stop here because you can read it here. No, Ji. go back. Or here only, you can wait here, no problem. Yes, sir. You can read this now. Here you'll find even small increase in Mm-hmm. temperatures, how it affects the uh, farm produce. Yes. By the end of the century, US maize yield could fall by one third from heat stress alone. Mm-hmm. So, this is because, and simultaneously remember,
What was India's population at the time of independence? Were barely about 36 crore, 36, 37 crore. And today it is 146 plus crore or 140 plus crore. In this 75, 70 years, 75 years, we are jumped by more than 100 crores. And all these 100 crores require their share of water, require their share of education, jobs, everything, including food, of course. Yes, sir. So this is how is going to affect, which is affecting us, because the population is going to increase. I was just reading the article other day, and it is hopefully the world population will start. Today it is 800 crore, 8 billion. 800, it is, they are expecting it may rise further, and it will by stabilize by about 2050. Ji, Hopefully. ji. That is prediction. You know what all happens nowadays, whether it is the man-made things like Ukraine war or the Gaza war or whatever is happening. So let us not go there. Let us go to the Ji, next sir. slide. Ji. Next. Look, at a 1 degree centigrade rise, we increase wheat yield decrease by 21%. Ji. Now imagine, wheat is, like rice, wheat is a staple diet in major portion of India. So imagine Ji. what is going to happen. So we have to be careful. Next. Sir, should I stop here or should I move on? No. Let us go ahead. Let us go ahead. Ji, ji. Because agriculture, I'm not speaking much. I'm just Ji. showing you something. So let us go ahead. Now we have come to water. Ji, ji, Okay. ji. Let us go to water. Yeah, next water may. Now what happens is water. Here we will wait for a few seconds. As far as the world is concerned, on an average, including India, there are three major users as far as the water is concerned. 70 to 75% all over the world figures, we are taking Indian figures here, is consumed by the farm sector or agriculture sector. With the industrial revolution, industrial on, 18 to 20% of the water is consumed by industry. And balance, whatever is left, 10 to 8% is used by domestic use for everyone, everyone's use. Next. Similarly, when we spoke that temperatures are rising, Pune, when I was first time posted, it was way back. That was in 72, 73. And those days, I can rightly say it, in Maharashtra, including Pune, was a non-fan station. I belong to Kolhapur, part of Maharashtra only. पंखे तो थे नहीं, there were no fans available in the houses, nor available in the shops. Because the temperature, I remember, Pune temperature, it never used to cross 30 degrees. अगर 30-31 हो भी गया थोड़ा कभी, एक दो दिन के लिए, तो people say, कितनी गर्मी हो गई. Today it is 42. 31 लगता है कि snowfall होता था 31 में. It is that cold. Now you see what happens today. It is I'm just giving you example of Pune because I'm here. But wherever you are, you must have noticed it. How the temperatures are. And as the temperature goes up, the evaporation from the soil also goes up. Evaporation from the reservoirs also goes up. Every entity requires more water. थक के आते हैं, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, बॉम्बे में हो, तो इतना पसीना आ जाता है कि यार नहा लो एक बार. तो दिन में जाते समय भी नहाते, आते समय भी नहाते. What I'm trying to tell you is that even simple example like this, it mentions to you that temperature rise also increase the water use rise also.
Remember, water is a finite quantity till such time technical breakthrough takes place and the ocean water is able to be converted to potable water. So far, it is not economical. Not that it is not taking place. Israel or many of the Arab nations are also using they are doing it, but money plays a very major role, which we can't afford. Next. Let us go ahead because you'll find the how the aquifers, that is underground water storage, affects India is in a red. I'll tell you why. Let us wait here only. Now, groundwater, like I mentioned, to 90% in the in that, if you see the categorize, you'll find 2% water is whatever we can see surface, etc. And zero point 0.6 more than 0.6% water is groundwater. Today, the surface water is highly contaminated. Tell me a river from where you can pick up the water. I know that in Kolhapur, when I used to be there, we were staying very close to riverside Panchaganga. People used to come and take the water and take it their home for drinking. It was that clean because the industry was not there around to leave the effluents into the untreated industrial effluents inside the. Most of the agriculture also was the organic. जी This was non-organic, तो था ही नहीं. बिल्कुल हाँ जी Natural resources were used. So the water was very, very clean, rivers were. But now, over a period of time, these rivers have become dumping ground. गणेश जी की पूजा होगी, आइडल जी कहाँ जाएंगे? गणेश जी नदी में जाएंगे. जी दुर्गा माता सेम. Even flower offering goes there only. जी Your city rivers देख लो, पूरा गंदा हो चुका है. यस सर And simultaneously पानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है. पॉपुलेशन इतना बढ़ने की वजह से we more depend upon surface water. तो पी नहीं सकते, इतना गंदा हो चुका है. So we depend more on the groundwater. And India, time and again, people are telling the Indian government or Indian authorities that भाई साहब थोड़ा groundwater का भी ख्याल रखा करो. We are the highest ore extractor or highest extractor of the groundwater, which is unsustainable, resulting in groundwater table going down rapidly. Next. Next slide, Chitra ji. जी Now, go back. Go back. ओके I just dwell upon that particular slide. जी जी सर जी सर Yeah. Air, water, soil, forest. These are assets of the Mother Earth. Pancha हम्म Mahabhuta. हम्म, It is like that. Out of जी that, what we are saying. And now what is happening is all these are being affected. All these are. Air is getting polluted. Naturally, इतनी गाड़ियां बढ़ गई है, इतनी इंडस्ट्री बढ़ गई है, and we are still using the fossil fuel. So naturally, hell of a lot of carbon dioxide is there. Pune has got population of almost close to 72 lakh as per the PMC figures, and there are almost close to 50, more than 50 lakhs vehicles are there. Even if they use 1 liter, imagine of thousands of kgs of tons of the carbon dioxide is thrown into Pune's air every day. I'm not talking about construction activities, other things. I'm only talking about one particular thing, that is the vehicles. जी And that is damaging so much. Water, soil. So let us forest. First thing to be for development के नाम से सबसे पहले किसको काटा जाता है और sacrifice किया जाता है? The poor forest. My जी request to all of you will be to please check at what rapid rate I would have spoken to you more on this. Not possible. This जी time सर constraint is there. Next. जी this we have seen this year in Himachal Pradesh the Correct.
Yeah, you are staying there. You must have seen it yourself. Yes, sir. Yes, Into sir. how bad it is. Next, because this जी is sir. known जी thing. We are not going to dwell more upon that. Again, this is also safe. Last line only is very, very important to you and me. Is the amount of water is constant on this planet. जी It's not going to increase. जब तक एटमॉस्फेयर का कवच कुंडल अर्थ के ऊपर है, निकल जाएगा तो सभी निकल जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा. बट as long as it is there, but this is what we are supposed to remember is we are increasing in population, but the water amount of water in your place remains same. उतनी ही बारिश होगी, उतनी ही नदियां हैं, उतने ही डैम है. यू कांट प्लेस एन ऑर्डर ऑन दी ऑलमाइटी, यार थोड़ी बारिश बढ़ाओ, यार जी नई दो चार नदियां बनाओ, ये तो हो नहीं सकता. बिल्कुल और सर इसका बिल्कुल. इस्तेमाल कैसा करना, ये हम लोगों ने सीखना चाहिए. चलो नेक्स्ट. जी We have seen this. Agree. We have discussed that. So let us go next. जी. Now, this is simple. Means what I'm trying to tell you is हम्म how do we save the water? हम्म The when we go back to the rainwater harvesting history, only India. I'm not talking about the worldwide. जी So recorded history is 4,500 BC. हम्म At that time, written recorded history says that rainwater was being used for agriculture purpose and drinking water purpose by our very old ancestors. They were using that. It's a part हम्म of a rainwater harvesting, rainwater conservation. They were doing that. What happened is when the great tap came to your and my house, every bathroom, wherever it required. I want on kiya pani aa gaya. हम्म Now, earlier what used to happen, देयर इज टू बी कुआं, वहां से जाके पानी लाते थे, या बोरवेले वहां से पानी लेते, जितना चाहिए उतना ही पानी लेते थे. अभी तो टैप खोलो पानी ले लो. हाउ मच इज, बिल्कुल. I'll go back to that slide later on. Come to हम्म that slide. Is you're authorized in the cities as per the WHO, which are adopted by the Indian government, is 125 liters of water per day per person in ओके. the urban areas, and in the हम्म rural areas in villages it is 65 liters per day per person. हम्म I'm not going into detail why उनके लिए इतना कम है, बात ज्यादा है. That if you see it, you will understand it why it is. And naturally everywhere, आप गांव में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जैसे कि 60s में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू कर दिया इन देश में, 60s 70s में. So हम्म borewell came onto scene, and then we started pumping out the water at rapid rate. Naturally farm sector increase efficiency, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा. We do not now import foods, grains from, only we take it. We have got enough to feed our population, so that's a good thing. So where is the water now today? Punjab, the water table has gone so down that जी now you are getting a salty water in Punjab. जी So this is happening everywhere. So what is the solution? Solution lies save the water which is falling on your head or on wherever you are staying. Are जी we doing? अभी आप सोच लो अपने पास कितना जी पोटेंशियल होता है रेन वाटर का. इन पूना में 750 मिलीमीटर बारिश होती है. इसका मतलब है 1,000 स्क्वायर फीट के छत के ऊपर, रास्ते के ऊपर, यानी कैचमेंट एरिया के ऊपर जहां बारिश गिरती है, 75,000 लीटर बारिश का पानी सालाना गिरता है. जी जी वही बॉम्बे में क्या है, द बारिश की हालत है 2,500 मिलीमीटर. वहां पे 1,000 स्क्वायर फीट पे 2,50,000 लीटर पानी मिलता है. फिर भी वहां भी टैंकर चलते हैं, पुणे में भी टैंकर चलते हैं, क्योंकि हम अपने छत पे गिरने वाला बारिश का पानी इस्तेमाल ही नहीं करते. टेक्निक सिंपल है. आपको हम्म दिया हुआ छत है, छत का पानी बिल्डर पाइप देता है आपको, छत का पानी नीचे तक लाके छोड़ देता है. जी जी उसके बाद हमने सिर्फ एक फिल्टर लगाना है. क्यों? छत के ऊपर कोई गंदी चीज होगी, तिनके होंगे, बर्ड ड्रॉपिंग्स होगी, पत्ते होंगे, धूल होगी, वो ना जाए बोर के अंदर, तो इसलिए वो लगाते हैं.
और वो फिर बोरवेल को कनेक्ट कर देते। और फिर अंडरग्राउंड झरना जो है उसका टेबल मेंटेन रहता है सालाना। पहले क्या होता था, जब सॉइल नेकेड था, अभी आपको नेकेड सॉइल कहाँ मिलती है, जमीन मिलती है देखने को? नहीं मिलती। शहरों नहीं, में सिर्फ कहीं ग्राउंड पे जाओगे वहीं पे मिलेगी। अभी सही सभी बात। जगह पे सोसाइटीज में वेयर वी आर स्टेइंग, इट्स ओनली कॉन्क्रीटाइज और टाइल्स लगाए हुए। जी पानी जी नीचे जी कहाँ से जाएगा? जी। पूना में जहाँ पे 35% बारिश का पानी साल भर में नीचे जाता था एज अ रिकरिंग डिपॉजिट हम्म and maintain it for सालाना साल के लिए, today हम्म। it is all as good as low as 7%, 7 to 8%। बाकी ओ अंदर जाने के रास्ते हमने बंद कर दिए। तो ओ। सरकार क्या बोले दुनिया भर में कि भाई कम से कम छत का पानी छोड़ दो, या रास्ते के ऊपर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसमें रिचार्ज पिट बनाओ, ताकि पानी जमीन के अंदर जाए, भूजल को बिल्कुल पानी बिल्कुल। मिले। चलो नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। इज दिस स्लाइड विजिबल सर? चित्रा जी नेक्स्ट। अच्छा, ओके। So, is this visible, sir? Water and economy? Yeah, it is visible to me, it should be visible Ji. to others, I don't know. Yes, it You is. know, It is. Sir. It is. what happens is it's obvious. Water and economy is closely related. Ji. Sir, I hope that you can see it clearly because your voice is not reaching us. Colonel Dalvi, sir. My voice is reaching to you, sir. Okay, I think there is some internet connection problem because he was telling that it is raining heavily in Pune. So till sir came back, I'll just brief my listeners about Colonel Shashikant Dalvi, sir, because he has done a lot of work on not just water conservation, but entire when we say climate protection and impact of, like we were talking about global warming also. So post retirement, he designed and implemented Pune city first rooftop rainwater harvesting project in 2003 for his housing society. And this Chitraji, I am back. Let me finish this. right sir, right sir. I thought that Let you us, were not. Ji yeah, ji yeah, ji. आ गया वापस, so everything हाँ was जी हाँ restored. जी हाँ जी हाँ So जी सर हाँ जी। let us see this. The according to me, these are what figures I'm giving you is either from the net or the newspapers. You can see. जी अब बीमारी की बात कर रहे थे हम, कितना पानी खराब होता है, कितने लोग बीमार पड़ते हैं, और साफ सुथरा पानी नहीं बनता पीने के लिए। सी 7 million man hours are lost every year जी because people falling sick because of the waterborne diseases. जी जी जी। अगर पानी हमें साफ सुथरा सभी जगह पे, हम्म। ग्राउंड वाटर भी साफ सुथरा है, पीने का सरफेस वाटर भी साफ सुथरा है, तो फिर ये 7 million man hours कैन बी यूज for the better purpose. Industrial output will increase that much. जी। Next, next. यस सर। These अभी are the इंडिया में देखते हैं तो ये तो नॉन फिगर्स है, नथिंग लेस टू गेट, बट जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओनली वन थिंग इज population in India is almost 18% of the world population, जी whereas
fresh water we had having only 4%. Yes, sir. नाइंसाफी है, I can understand, बिल्कुल but that is Mother Nature's role to play. Next, जी history I mentioned to you. जी We are the oldest rainwater harvesters. We are still here. It is now here we can for a few seconds we can say जी that जी how the 125 liters, 135 liters waters distribution is given. Check that when for bathing you are giving 20 liters per day per person. आप 2 बार नहाते हैं तो हम्म देखिए गर्मी के दिनों में 40 लीटर पानी आप ही खा जाते, मैं हम ही खा जाते, आप क्या मैं भी हूँ शामिल उसमें. जी जी दैट मीन्स यू फ्लशिंग इट्स, कितना पानी जाता है. तो क्या है कि अननेसेसरी हम मेरे सोसाइटी के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दिस वाज फर्स्ट सोसाइटी इन महाराष्ट्र, नॉट ओनली पुणे, where we ओके did the rainwater harvesting way back in 2003. ओके And today जी the जी water table is increased from 225 to 50 feet. हम 24 वाह घंटा अभी पानी की कभी कमी नहीं पड़ती. That's why I'm telling you, मदर नेचर हेल्प्स यू. वो जी बोलता है मेरे को मेरी प्यास है, उसको तो बुझा दो. मेरी प्यास आप बुझा दो, मैं आपकी प्यास बुझा देती हूँ पूरे साल भर के लिए. बिल्कुल हम तो बिल्कुल साला उसका ही पानी पी रहे हैं, और जहां जहां से वो भी खींच के पी रहे हैं. सर जोक सपाट. एंड दैट इज हाउ 65 लीटर्स फॉर द वो उन लोगों के लिए, because things are different, so uses are different. That is how it is less in the rural areas. Next slide. No, next. Let us go. This population, etc. We are not interested in this. Next, what I'm trying to tell you here in this particular slide is, in the last slide was how whatever natural assets which you have got, the Pune has got, and still we are facing the water shortage. Imagine, actually, five rivers are there, as a matter of fact. Mula, Mutha, Pauna, Dev Nadi, and Ram Nadi. Dev Nadi is dead already because of the pollution. Ram Nadi is in the verge. People are fighting tooth and nail to make it clean. I hope government gives support. This must be happening across the board wherever you are. Next. Surface water, in at least I can talk about Maharashtra Pollution Control Board. Not a single river is clean. Everything is dirty. Everything. Next. Means एक साइड में सरफेस वाटर खराब है, यू कांट यूज इट. ग्राउंड वाटर इतना खींचते जा रहे हैं वो डिप्लीटिंग होता जा रहा है, कुछ दिनों के बाद वो भी नहीं मिलेगा. This is, government of India categorically says that our over extraction is unsustainable. What happens is central government can only give advisory note as far as the water is concerned. It is जी the local body government and the state government, but local body government has got a major role to play. They say, like in Pune, 2002, there was a government of passed a GR, government resolution passed to state that all the government and public कर्नल डालवी सर check it up and do this. So जी based on that, they had done that. So it is everywhere. So unless until we change our practices and implement rainwater harvesting, we are not doing that. कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Next. जी This is everywhere. Pune, it is mostly it is 100% domestic sewage is not treated. क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, सरकार स्यूएज ट्रीटमेंट प्लान बना देती है, लोकल बॉडी को, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया. पॉपुलेशन तो रुकेगा नहीं, नहीं भाई अभी तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमने इतने लोगों के लिए स्यूएज ट्रीटमेंट प्लान बनाया, बाकियों को क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम. तो बाकी क्या करते हैं, नदी के किनारे जाते हैं,
They have to, the natural urge है. तो naturally 100% domestic sewage treat होता ही नहीं है. It is barely 55 to 60% in Pune. Remaining untreated sewage goes there. Same is everywhere. So what I'm trying to say is, it is everywhere. What we are saying, there are policies, there are policies for water conservation. Like, of course, water conservation policies are not there. अबे अभी गाड़ियां देख लीजिए. आप गाड़ी धोते हैं, 1.5, 2, 3 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं. अगर पूना में 50-60 लाख अगर गाड़ियां हैं, तो करोड़ों लीटर पानी, जो 1 लाख लोगों का पानी रोज के रोज हम गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं. व्हाट अ शेम यार. इट्स अ क्रिमिनल इनजस्टिस. नेक्स्ट. नेक्स्ट. कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. जी No, I'll not go in, because this is not this was 1980 to 2000. A 20 years study was carried out on the orders of the central government parliament, and they found out that 90% of the districts in India, water table is going down. So based okay on that, then Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, he had appealed to the nation कि भाई आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो. नहीं तो वो तब की बात है. I'm talking about 2000. जी 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 Next. Next. He also is trying to, good old man, very good statesman, no doubt about it, harvest the rainwater. He says categorically. जी जी This I have spoken to you. Next. I think now, Chitraji, I will stop, because right there sir. is wastage. We have to stop. Let us stop, and let us see if we have got Few some questions, yes sir. questions. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So sir, we have seen the slides. We have heard you talking about water conservation, impacts of global warming on water resources. So, before asking direct questions related to the topic, I have read your profile, and you were so like humble. We have invited you earlier also, long back. You have come in Hmm. our webinar. So, sir, your experience is undoubtedly very, very much. So, my very first question to you is, like, from army background, when you retired and you come to the civilian life, what inspires you and how are you motivated towards this field, and then you work with media, with government, with politicians, and also with the school childrens. You are doing these kind of awareness programs for lot many schools children also. So I want to we want to listen to your journey, sir, first of all. Chitraji, I was expecting this question, because wherever I go, people ask me this question. मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है जोकिंगली, तो मैंने जुर्म कर दिया यार. 32 साल फौज में गुजार के यहाँ आए, तो मैंने आई शुड हैव स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ like a good sportsman, no, Yeah. what happened here is, जी they वही रिटायर होके बंदा आया है सोसाइटी जी का, नई नई सोसाइटी थी, चेयरमैन बना दी. तो मैं चेयरमैन बन गया, और मैंने जब हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया, तो हाँ वहां जी. देखा कि पानी का रोज के 3 टैंकर लगते थे, अच्छा. और खर्चा साल का 3 लाख रुपए होता था. मिडिल क्लास सोसाइटी है. तो हम्म. मैंने कहा यार, ये पैसा आएगा कहाँ से, फिर क्या जी. करेंगे. अच्छा, उन दिनों में गूगल बाबा साथ में नहीं थे. हाँ जी आई एम टॉकिंग अबाउट 2002. कहाँ थे गूगल बाबा? देयर वाज नो गूगल बाबा टू जी टेल जी यू. दैट मींस आई हैड टू चेक अप, go to libraries or go to Institute of Engineers offices here. This is सब, यहाँ कोई केस स्टडी तो है ही नहीं. So whatever during my army days, what I have seen in Rajasthan, good old techniques. These were very old techniques. But मैंने कहा, let me try it. I was able to convince my society people. मैंने कहा, let us try. तब हमने कैलकुलेट किया था, बहुत कम खर्चा आ रहा था. तो लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया, और फिल्टर भी डिजाइन किया. अभी तो अक्रॉस द बोर्ड आपको फिल्टर मिलता है, उन दिनों में नहीं मिलता था. तो हमने जी फिल्टर भी डिजाइन कर दिया. एंड देन गॉड ऑलमाइटी हेल्प्ड, और मदर नेचर हेल्प एट द मैटर ऑफ फैक्ट. एंड जी 2003 was the June we implemented the system, and from July onwards our tanker water stopped. मैंने बोला यार, अगर हम कर सकते हैं, I'm a फौजी यार, I'm not a qualified hydrologist or geologist or big way. But then
मैंने कहा अगर मैं कर सकता हूँ, हमारी सोसाइटी कर सकती है, नॉर्मल पीपल है रहने वाले, तो व्हाई नॉट अदर्स? सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. जी पीपल हेल्प मी लाइक यू चित्रा जी. द न्यूज़पेपर वाला केम, दे आल्सो सॉ, उन्होंने देखा खुद. लोगों ने टैंकर वाटर के बिल भी चेक करके देख लिए, भैया वाकई पानी नहीं आता इनके पास, सच बोल रहे हैं. वाटर जी टेबल ऊपर आने लगा. पीपल वेयर देन, एंड दैट इज हाउ then the even I helped the Pune Municipal Corporation, help them implement on their 74 buildings of the Pune Municipal Corporation with the जी rainwater harvesting. Then it started, and in the 7 states I'm working, more than 700 projects have been completed on any infrastructure, any type of infrastructure, and they have become tanker water free. Similarly, more than 200 villages, with the help of the CSR fund from a bank, we have made them tanker water free. I feel more grateful for that particular help because the village is bad. Villagers are bad. They don't get a water, जी and especially the water crisis area जहाँ जहाँ है, whether यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है, सभी जगह जी पे मैंने देखा जहां जहां है, देर आर आई कीप गेटिंग लेटर्स, बट देन वेयर इज द मनी? समबडी CSR funds only can help. What happens in urban areas, cities वगैरह में, suppose I'm doing for a society or industry, money is paid by the organization. जी जी कॉलेज हो, ट्रस्ट है, स्कूल है, वहां से पैसे मिलते हैं. बट दिस इज नॉट सो इन द विलेजेस. एज इट इज दे आर पोर, तो सब पैसा कहाँ से लाएंगे? कितने घर होते हैं? तो खैर, that is how it moved. And then, well, the people like you helped me spreading the word, awareness word. I went to parliament also, the 2017 July. I was invited by the Ministry of Urban Development to discuss on the rainwater harvesting systems in metropolitan cities. We जी discussed. It was very, very, मुझे also, because there are decision makers, there are policy makers. तो जी उनके साथ डिस्कशन करने का मौका मिला. They are also very well qualified. Some secretaries were there. It is a learning process. Every time we discuss, at least I discuss, I keep learning certain things. So that जी is how the journey is going on. Today I am with you. जी सर वन थिंग वांट टू आस्क दैट एक होता है बड़ों को समझाना, बड़ों से बात करना, उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग Correct. होता है, बट जब हम बच्चों के लेवल पे आते हैं, एजुकेशन लेवल पे आते हैं, स्कूल लेवल पे आते हैं, तो आपने कुछ चैलेंजेस नोटिस Yes, I किए? can't hear you, Chitra ji. ओके सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? So we are in conversation with Colonel Shashikant Dalvi, sir, and I think there's some internet issue, so we'll definitely join back with sir in a short while. Yes, sir, you are on mute, sir. Sir, you are on mute. जी हाँ. जी You were talking about the बड़ों का कुछ बोल रहे थे आप, तब तक वो हाँ हाँ चले गए. जी 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 जी, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जब हम एक बड़ों से इस बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, तो वो एक अलग लेवल आता है, पर जब हम बच्चों के लेवल पे जाते हैं, एजुकेशन लेवल, स्कूल लेवल पे, तो आपको क्या महसूस हुआ जब आप इस प्रोजेक्ट में उतरे? तो चैलेंजेस क्या रहे, और आज के समय में स्कूल में क्या है, और क्या है कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो उनको एजुकेट करते हैं, बिकॉज this is something very important to educate child about this particular thing. Yeah, I totally agree. It's a very good question, Chitra ji. Now here it is. You know what happens is, uh, how many of you are aware of something known as a conference of parties? These are related to the climate change. It started way back in Rio de Janeiro, very, very long time back. Now Mhm. this year it is COP28, the 28th meeting. I'll take you back to COP21. That was in December. It's Paris Agreement, December 2015. जी Now, actual 195, and then everybody said यार हमें कुछ करना चाहिए. रहे हम जी कोशिश भी करते हैं, हम्म बट वी आर अ डेवलपिंग नेशन. हमसे भी पुअर नेशन से पैसे कहां से आएंगे? So that time it was stayed.
कि $100 billion every year rich nations will give for the climate funds. जी अभी तक नहीं मिलता है पैसा. पैसा नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी? हम्म So why I took you back there is every time 2015 when you told category by the great scientists lobbying that by 2050 we are likely to cross 1.5 degree centigrade temperature rise. आप बोलोगे यार 1.5 डिग्री से क्या फर्क पड़ने वाला है? But remember, Earth temperature 15 degrees temperature. जी And if it is increased by 1.15 degrees centigrade, it's so bad. Untimely, everything is going for a 6. You are staying in Himachal, if you are staying in hilly terrain, you know what the problems there are different than what we are facing on the plains. जी So जी सर all these things are happening. And there the point comes. You know, that time they say 2050, life will be very bad. Nobody knows when it reaches 1.5 degree. No mathematical model is used, at least not to my knowledge. जी अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो क्या होगा दुनिया में? Nobody knows because 1.15 पे ऐसा हो रहा है. And then what happened was they say now last year say 1.5 degree centigrade temperature rise will take by 2030. ओके Between 2025 and 2030. क्या अभी 2 साल बचे 2025 के लिए जी और 7 साल बचे 2030. 2023 तो खत्म ही हो गया. यस सर इमेजिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है उनके लिए क्या लिखा है हम लोगों ने. वी आर रिस्पॉन्सिबल. आई एम क्लियरली सेइंग दिस. हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये जो फोसिल फ्यूल का दुष्परिणाम क्या हो. What is the bad effect is going to have on our every resource? When we have realized it is too late, how are we going to डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? बिल्कुल स्कूलों में हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है. इंडस्ट्री एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ, आप उनको पूछो क्या किया है अपने एग्रीकल्चर जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर से पूछो, बोला मेरे को पास तो कोई रिटर्न में ऐसा नहीं, क्या करूं मैं. जी एवरीथिंग इज अफेक्टेड, इजंट इट? तो यस हम सर क्या करेंगे? बच्चों के लिए जब जाता हूं मैं, टीचर से बात करता हूँ, प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ, पूछते हैं सर, बोला कि सर इनके लिए हमारे सिलेबस में कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है. क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? तो डर इस बात का रहता है. हमने तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, बड़े अच्छे टेम्परेचर थे, बड़ा अच्छा खाना पीना, अभी तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है. तो ये हालात जब है तो क्या करेंगे हम लोग, मुझे बताओ. तो डर लगता है मुझे. बच्चों से बात जब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. आई ट्राई एंड गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दी चिल्ड्रन कि कुछ करो आप लोग. जी वो क्या करेंगे? वो बोलते कि वो क्या कर सकते, उनका कोई दोष नहीं है. दोष हम लोगों का है. हम डिसीजन मेकर्स है, हम पॉलिसी मेकर्स है. हम मीन्स हमारे एज के जो भी लोग हैं, या क्वाइट जूनियर, आई एम 76. मैं अभी कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बना सकता हूँ ना, पहले कभी बनाई है. जी तो ये करने चाहिए, आप लोगों ने उठना चाहिए. मीन्स स्टूडेंट्स लॉबी है, टीचर्स लॉबीज है, प्रोफेसर लॉबीज है, आप जैसे जी एनजीओज है. दे शुड जी फोर्स कि भाई इनको कौन पढ़ाएगा. ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना है. वो लड़की बोल रही थी कि अगर 2030 में ये सब खत्म होने वाला है तो कॉलेज में हम क्यों खर्चा करके, पैसा खर्च करके जाए उधर. अगर डूबने हाँ वाली जी हाँ दुनिया जी गर्मी से तो हम वहां जाके क्यों पढ़े, क्या जरूरत है? टेल मी. सो शी वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशंस. शी वाज एड्रेसिंग द big scientists and the decision makers there. They were aghast. तो इसको क्या जवाब दे, क्या जादू की छड़ी हमारे पास? अच्छा, जी पैसा देने के जी लिए अभी बोलते हैं, अभी यूक्रेन की लड़ाई शुरू होगी, बीच में कोरोना आ गया, अभी गाजा की शुरू होगी, पैसे इधर उधर देने पड़ते हैं. आपको कहां से देंगे $100 billion? जी दिस इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट. yes sir um uh, sir I know I'm taking much of your time but
The topic is very interesting. So questions are coming. So I would like to take them. So one thing is that sir, like you were telling us कि to save water, पानी को बचाने के लिए क्यों ना हम छोटे छोटे प्रयास करते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, सिक्योर करते. तो ऐसी से कोई कोई बुकलेट या कोई बुक होगी जिसमें 101 टिप्स लिखे होंगे इस तरीके से वाटर सेव किया है, या कुछ जिसको कि यंगस्टर्स भी फॉलो कर सके, और मतलब हम सब देख सके, सो दैट हमें पता चल सके. क्योंकि जो हम थोड़ा बहुत सुनते हैं उसी से हमें कुछ पता चलता है, अदरवाइज तो हमें पता नहीं कि किस तरीके से ये चीजें सेव करनी है. या वेरी गुड. मैंने एक बार क्या किया था, एक स्कूल में, पूना के एक स्कूल में, जी आई एम वर्किंग विद 125 स्कूल्स, जी इंग्लिश जी मीडियम स्कूल, जी. थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर इन एजुकेशन का एक सीरीज है उनकी, उसमें मैं काम करता हूँ, उसी के लिए बच्चों को जाके इसकी जानकारी देता हाँ जी हूँ. हाँ जी. सेम क्वेश्चन चित्रा वाज आस्क्ड मी बाय सम गर्ल स्टूडेंट्स. वो बोलती कि हम क्या करें बताओ. अच्छा. जी. दे न्यू कि भैया डर तो है. हम्म. मेरे ख्याल 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे. मैंने जी. बोला यार शुरू करो अपने पास से. मैं हम्म. आपके घर आ गया, आपने हम्म. मुझे ग्लास भर पानी दे दी, इजंट इट? ठीक है. हाँ हाँ, जी हाँ ऐसे जी. कहना है. मैंने 2 घूंट ले ली, उतनी ही प्यास थी, और हम्म. चलो यार उन्होंने पानी दिया, थोड़ा पी लिया. अच्छा, उसके बाद मैं पूछता हूँ उस पानी का क्या करते हैं. सर वो तो झूठा हो गया, फेंक देते हैं. हम्म. क्लीन माइंड, कोई सोच समझ के कोई उल्टा पुल्टा उत्तर जवाब नहीं देगा. हम्म. गो बैक 30-40 years. हम जब घर जाते थे किसी के, हम्म. वो लोटा और प्याला देते थे. बिल्कुल. याद हाँ करो जी वो दिन, है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी अभी हाँ जी. नानी के घर जाओ, दादी के घर जाओ. जी मुझे जी. याद है हम भी, हमारे घर कोई आता था, लोटा और प्याला, उसमें पानी, ताकि हम प्याली में पानी देके जितना चाहिए उतना ही पी लेते थे. अभी हम्म. इतना पानी, आप होटल में जाइए, मैं जाता हूँ मेरा झगड़ा ही होता है हमेशा. घर वाले बोलते हैं यार तेरे साथ नहीं चलेंगे. हर चीज के लिए बोलता है इतना पानी मत दे दो, जितना चाहिए बॉटल यहाँ रखो, जितना चाहिए डाल के ले लेंगे. हम्म. नहीं, सब आपके लिए वो ठीक है, बाकी लोग बोलते नहीं डालो. जी तो जी. देर आर थिंग्स विच वी कैन चेंज. इफ आई हम्म. कैन चेंज एट माई ओन हाउस, जी 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 जी. तो डेफिनेटली. अच्छा, जो झूठा पानी है, मैंने हम्म. वो उसका क्या करेंगे, वो पूछो, बोले छोटी एक बकेट ले लो, उसमें वो पानी डाल लो. हम्म. नेक्स्ट सुबह जब आपके घर में मेड सर्वेंट आती है ना, पोछा करती है वो, जी जी तो जी. उसी, अभी जमीन तो बोलेगी नहीं कि मुझे झूठा पानी से साफ कर रहे हैं. हम्म. या तो वो पानी आप अपने पौधों में डालो, बिल्कुल. या अपनी साइकिल होगी या स्कूटर होगी उसको साफ करो उस पानी से. यू हम्म. कैन कंजर्व एंड रीयूज द वाटर जी फॉर सर. सम डिफरेंट पर्पज. जी सर. छोटी छोटी चीज जो हम कर सकते हैं, दे आर डुएबल. हम्म. उसके लिए सरकार से कोई लेने की जरूरत नहीं है. हम्म. दूसरी चीज लीकेज होता है. आप खुद ही देख लीजिए चित्रा जी, इतना पानी लीक करता है. हम्म. 30% वाटर इज लॉस्ट इन लीकेजेस. आप जी जब जी सरकारी आंकड़े देखते हो, यही जी. उतना ही पानी हमने, दैट मीन्स हम अपने घर से शुरू करते हैं ना. घर में पानी अगर लीक कर रहा है, हम्म. तो उसको जल्दी से जल्दी पिताजी को बोल करके बंद करवा दो उसको. जी सर. उतना पानी बच जाएगा, उसके नीचे बकेट रख दो, वो पानी बकेट में भर जाएगा. तो उस पानी का कहीं और चीज के लिए इस्तेमाल करो. करना बिल्कुल. चाहिए. एक दिन आएगा कि पानी नहीं मिलेगा. हम खुद ही कर सकते हैं. गाड़ी, मैंने अपनी सोसाइटी में कैसा किया, गाड़ी पानी से नहीं धोनी. अच्छा जी. एक बकेट ले लो, एक बकेट में 5 गाड़ी करनी है आपने. कपड़ा ले ओके. लो, कपड़ा पोछ, कपड़े से डुबा लो, कपड़ा पोछ लो, पहले उसको निचोड़ के पानी निकाल लो, गीले कपड़े से गाड़ी धो लो, गाड़ी बिल्कुल. पोछ लो. वही जी तो जी चाहिए. पानी बच जाता है. 5 बकेट की बजाय एक बकेट से 5 गाड़ियां हो जाती जी है. सर. मीन्स वी हैव टू, और देख करके वी हैव टू इवॉल्व. जी सर. चलो बाकी कोई सुनेगा नहीं, मैं बच्चा हूं करके, तो अपने घर के लिए करो. और बिल्कुल. लॉग बुक मेंटेन करो. हाँ जी हाँ जी. और एंड ये मैंने किया था. नाउ फील प्राउड, शी विल फील आई हैव हेल्प मदर नेचर. जी जी. And even the teachers will feel very proud. हम्म. Somebody is doing, others will follow. हम्म.
लॉन्ग रन प्रोसेस है, बट क्या कर सकते बिल्कुल सर। हैं? ये करने वाली चीजें हैं। जी। 101 टिप्स, चित्रा जी आप बैठ जाओगे एक दिन तो आप ही खुद बना दोगे। ऐसी कोई जी बात सर। नहीं है। राइट सर, राइट सर। इनफैक्ट सर हमने when we क्योंकि हिमाचल में मैंने खुद देखा है, यहाँ पे शिमला में जिस समय बर्फ पड़ती है या पानी कम आता है, एक दिन आता है और 3 दिन नहीं आता, तो मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से सिर्फ एक आधी बकेट से, थोड़े से टब से वो अपना पूरा मतलब किचन का काम करते हैं। तो ते करते उनको हैं। उस तरीके की आदत है। जी। तो ये चीज है। हाँ, सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगी सर। हमारी प्लीज। गवर्नमेंट ने भी काफी प्रयास किए हैं, जैसे लाइफ प्रोजेक्ट निकाला, लाइफ फॉर एनवायरमेंट करके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी ग्लोबल लेवल पे बने हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाटर कंजर्वेशन की तरफ कैसे इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? क्या? सर योर वॉइस इज क्रैकलिंग। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी। हाँ जी। सर आपको मेरा क्वेश्चन हाँ, मिला सर? जी कैन यू आपकी हियर मी? आवाज। हेलो। हाँ जी सर, अभी आ रही है सर। सॉरी सर, सॉरी। सर आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अभी जी। अभी अभी है? जी जी बिल्कुल सर। सर आपको मेरा क्वेश्चन, आई होप आई मतलब मेड इट क्लियर। मेरा क्वेश्चन आपको पता चला सर? नहीं, आई वो बीच में कट हो गया था। अच्छा अच्छा, ओके। सो मैं ये जानना चाह रही थी सर, बेसिकली छोटी सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज इस पे गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। लाइफ प्रोजेक्ट निकल के आया है फॉर एनवायरनमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बने हैं क्लाइमेटिक एक्शंस पे, वाटर कंजर्वेशन पे। हाउ यू लुक एट इट, और वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे आगे आने वाले सालों में? एक सक्सेसफुल तो होंगे, बट जी। उसपे क्या है, ये हम्म। स्लो ड्रॉन प्रोसेस है। अभी ओके। देखो, अब गाड़ी की, अब गाड़ी पे ही है। तो अगर छोटे छोटे चीजों में ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो मतलब क्या है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट हमने कम करना जी जी। चाहिए। बिकॉज हम सर आपकी आवाज। नजदीक कहीं, नजदीक कहीं जाना जी है कि नहीं? अभी जी मान लो मैं विमान नगर में रहता हूँ, जी ज्यादा से जी ज्यादा डिस्टेंस 2 या 3 किलोमीटर है विमान नगर का, जी एक कोने जी। से दूसरे कोने तक। हम्म। तो हम, मेरे घर वाले, हम सभी लोग पैदल जाते ठीक है। हैं। हाँ, एक तो सेहत अच्छी रहती है, हम्म दूसरा वैसे भी पार्किंग की जगह नहीं होती है, हम्म। तो अच्छा है, आप पैदल जाओ, पैदल वापस हो जाओ। बिल्कुल। अगर हर एक आदमी ऐसे करने लगेगा तो हम्म। कितना पेट्रोल डीजल बच जाएगा, कितना अपने खुद का पेट्रोल, वो कार्बन फुट। अभी मैं छोटी सी चीज बताऊं, तीन जी। टैंकर हमारे कम हो गए, वो हम्म। 3 टैंकर से 30 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सोसाइटी का सालाना कम हो। जी 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 जी। अभी देखिए पूना में 17,000 हाउसिंग सोसाइटी, हाँ जी। 5,000 हम्म। आपको टैंकर वाटर आता है। हाँ जी हाँ जी। आप समझिए कि अगर ये छोटी चीज हम करते गए तो कितने भी सुना होगा, पुल अप कार, है ना, कार पुलिंग करते थे। हम्म। यानी आप कहाँ जा रहे हैं, आप फलाना फलाना जगह के जब जा रहे हैं, तो हमने 4 लोगों की दोस्ती हो गई, वहां से उतर के या तो पैदल जाएंगे या छोटी डिस्टेंस तक बस या रिक्शा में जाएंगे। जी सर। करते थे ना, बहुत सारे करते थे लोग। बिल्कुल फिर बिल्कुल। बीच में वो टूट गया, कोरोना के बाद तो वो टूट ही गए। जी जी। फिर से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा जोर देना बहुत जरूरी है। उसी यस। तरह घरों में, अभी आप हिंदुस्तान में 70% बिजली ये थर्मल पावर प्लांट से बनती है। थर्मल पावर प्लांट में कोल जलाया जाता है, जी। कि वजह नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। तो अगर मैं 1 यूनिट बिजली बचा सकता हूं हम्म। तो 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकता बिल्कुल। जी है। सर। कैसे बचाऊंगा? घर के तरीके, आप भाई CFL बल्ब लगाओ, एलईडी हम्म। बल्ब लगाओ, है ना? हाँ जी हाँ अगर जी। वो चेंज करने से यूल फाइंड चेंजेस हो रहे हैं।
हमने अपनी सोसाइटी में किया, जहां हमें 22 से 25 हजार रुपए महीने का कॉमन लाइट्स की सोसाइटी का बिल आता था, वो हमने अभी 12 हजार पे लाया है। 12-13 हजार पे डिपेंडिंग अपॉन सीजन। सोलर नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ लोड शेयरिंग, ट्यूबलाइट 40 वॉट्स की ट्यूबलाइट थी पहले, उसकी जगह पे 10 वॉट का एलईडी लाइट लगा दिया। तो जी ये जी सब करने से थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बट जी इतने सर। पैसे हमारे ही पैसे, वो हार्ड अर्न मनी है। तो ये बच जाते हैं। ये जी करने सर। के लिए बहुत कुछ है। आप अपना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करो। मैं तो आपके एनजीओ को मैं अपील करूंगा, हम्म। आप अगर ऐसे कुछ छोटे छोटे नुस्खे लोगों को बताते हैं, जी सर। तो बिकॉज सरकार कोशिश करती है, और जी। सरकार के हाथ हमारे पास तक पहुंच जाने चाहिए, फिर हम्म। हमने भी कुछ करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारा हाथ ऐसा है, बिल्कुल, दे दो, हाँ जी। ये दे दो, ये कानून बनाओ, ये कैसे करना है, रेनोटेशन करके दे दो। अरे तेरा हाथ भी ऐसा करना। हाँ जी। फिर सरकार देखो क्या कर सकती है, या यस देश सर। देखो कितना दूर जा सकता है। यस सर। थोड़ा सा हमारा हाथ भी ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल। थोड़ा जहाँ पे मेरे यंग सुनने वालों को अगर आ जाए, पता लग जाए, तो मेरे ख्याल से आज का आने का मकसद जी मेरा साफ हो जाएगा। जी जी जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माय डियर व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, सर ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि एक अकेला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना माइंड से चेंज कीजिए, आप अपने एफर्ट्स कीजिए, आपके साथ कारवां जुड़ता जाएगा। और जब सारे लोग जुड़ते जाएंगे तो धीरे 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 सुधार होते होते बड़ा सुधार जरूर होगा। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड इट्स ग्रेट लिसनिंग यू टुडे। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी, आई मस्ट स्पेशली थैंक यू, बिकॉज आपने मुझे मौका दे दिया, पहली बात तो नहीं ये है। नहीं नहीं एंड सर, नहीं। एंड लिसनर्स का इसलिए कि जी। अभी तक उनका खाने का टाइम हो चुका होगा, फिर भी इस जी। बूढ़े फौजी को सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। नहीं। वेदर आई होप दैट इट वाज हेल्पफुल टू यू। जी। Take care, friends. Take care of your life, your near and dear one's life. God bless you. Have a wishing you all very, very happy, healthy, and green Diwali.